Hello everyone. Today we gather to celebrate Samvidhan Divas, the Constitution Day of India, observed every year on 26th of November, to honor the adoption of our nation's constitution. So this Constitution of India is not just a legal document. It is the guiding framework that defines our rights, our values, our duties, and the spirit of our democracy. So, on this occasion, let us come together for the whole ceremony, pledging to respect the Constitution and contribute positively to the progress and harmony of our country. So, have you all received the preamble? Okay. So this is in both languages, Hindi and English. One side is Hindi and one side is English. So we will take oath first in Hindi, then in English. Okay. So I will read it aloud and you will repeat it after me in sync. Okay. भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। The people of India, having solemnly resolved to constitute India, into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, assuring the dignity of the individual, and the unity and unity of the nation. In our Constituent